नमो नमः। गीताभ्यासे 3-8 नियतं कुरु कर्मत्वं +3-9 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र. A study by S.L. Abhyankar, Mumbai, Budhavasare, November 25th, 2020. It would be good to begin every session of Gita Abhyasa with recitation of Gita Dhyanam and the Namana Vakyam. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्. ओम श्री परमात्मने नमः. नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. पदच्छेदैः. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायः हि अकर्मणः शरीरयात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेत् अकर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. वाक्यांशोऽभ्यासः. द कॉलम्स हियर आर अनुक्रमांकाः, अव्ययाः, अन्ये सुबन्ताः, कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, क्रियापदीयाः. नियतं त्वं कर्म कुरु. हि अकर्मणः कर्म ज्यायः भवति. अपि च न ते अकर्मणः शरीरयात्रा प्रसिद्धेत्. अन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणः लोकः अयं कर्मबन्धनः भवति. तदर्थं कौन्तेय मुक्तसङ्गः कर्म समाचर. वाक्यांशः पदाभ्यासः अन्वयार्थाश्च. त्वं नियतं कर्म कुरु. त्वं युष्मत् सर्वनाम प्रथमा एकवचनं. नियतं नियत विशेषणम्. अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं. नि प्लस यम तस्य क्त विशेषणं नियत. At ashtadhyayi.com 01.0930 यम यांग अपरिवेशणे भ्वादिः परस्मैपदी सकर्मकः सेट. टू फास्ट, टू अवॉइड ईटिंग और टू कंट्रोल हंगर. 01.1139 यम यमंग उपरमे भ्वादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट. टू स्टॉप, टू रेजिस्ट, टू हिंडर. 10.0119 यम यमंग परिवेशणे चुरादिः उभयपदी सकर्मकः सेट. टू कीप अंडर कंट्रोल, टू नरिश, टू नर्चर, टू सर्व फूड. The difference between 01.0930 yam yamati yamang apariveshane and 01.1139 yam yachati yamang uparame is that formatting of their tigantaha is different. Yamati yachati, though the ta vishesham yata is identical. The first one is set and the latter one is anit. There is difference in meanings also. Here we have the prefix ni, which also causes change in meaning. There are many shades of meaning given in Aptay's dictionary for niyata. Passive participle. Curbed, subdued, controlled, abstemious, temperate, attentive, intent, etc. Niyatam is mentioned also as indeclinable
always, constantly, positively, certainly, invariably, inevitably, surely, forcibly. The meaning positively, certainly, niyatam seems to be quite appropriate here. Hence, I have blanked off all other meanings. Karma, karman, napusakalingam, dvitiya ekvachanam. Again, there are many meanings given in Aptai's dictionary. My selection is noiter, kru manin, unadi 4-144, action, work, deed, duty, kuru. Kru अष्टमगण उभयपदी अत्र परस्मैपदी लोट लकार मध्यम पुरुषः एकवचनम त्वं नियतं कर्म कुरु यू सर्टनली डू कर्म ही अकर्मणः कर्म जायः ही सिंस बिकॉज अकर्मणः अकर्मन् नपुंसकलिंगम पंचमी एकवचनम न कर्म इति अकर्म न तत्पुरुषः कर्म एज डिटेल्ड अबाउट जायः जायस विशेषणम अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम जायस एडजेक्टिव जायसी फेमिनिन कंपैरेटिव ऑफ प्रशस्य और वृद्ध एल्डर सीनियर सुपीरियर मोर एक्सलेंट और वर्दी ही बिकॉज डूइंग कर्म जायः इज सुपीरियर टू अकर्मणः नॉट डूइंग कर्म ते शरीर यात्रा अपि च अकर्मणः न प्रसिद्धेत ते युष्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनम अकर्मणः दिस वर्ड अकर्मणः is already detailed in 2 above as napusakalingam panchami ekvachanam, but here it merits to be deciphered also as न कर्म येन सह अकर्मा बहुव्रीहि then अकर्मणः अकर्मन् पुल्लिंगम षष्ठी एकवचनम शरीर यात्रा स्त्रीलिंगम प्रथमा एकवचनम शरीरस्य यात्रा इति शरीर यात्रा षष्ठी तत्पुरुषः शरीरस्य शरीरम नपुंसकलिंगम षष्ठी एकवचनम बॉडी यात्रा याष्ट्रन गोइंग जर्नी शरीर यात्रा बायोग्राफी और लाइफ बीइंग लिव्ड बाय द बॉडी यात्रा अपि च न प्रसिद्धेत प्र प्लस सिद्ध तस्य विधिलिंग लकारः प्रथम पुरुषः एकवचनम सिद्ध शिधुं संराद्धौ दिवादिः 4.0089 परस्मैपदी अकर्मकः अनिट टू बी थॉरली प्रिपेयर्ड टू बी अकॉम्प्लिश्ड टू बी अचीव्ड टू बी रेडी प्रसिद्ध टू बिकम नोन अपि च अकर्मणः ते शरीर यात्रा न प्रसिद्धेत एंड ऑल्सो योर बायोग्राफी may not be known for inaction. By the deciphering न कर्म येन सह अकर्मा बहुव्रीहि then अकर्मणः अकर्मन् पुल्लिंगम षष्ठी एकवचनम the phrase अकर्मणः ते gets the tone of such षष्ठी प्रयोगः. Hence अकर्मणः ते by your being inactive शरीर यात्रा न प्रसिद्धेत. Your biography should not be known. History should not record you as one who indulged in akarma, inaction. यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र अयं लोकः कर्मबन्धनः. Note, in the phrase यज्ञार्थात् कर्मणः, the two words are related to each other. कर्मणः is कर्मन् नपुंसकलिंगम पंचमी एकवचन. Hence, यज्ञार्थात् यज्ञार्थ नपुंसकलिंग पंचमी एकवचनम because यज्ञार्थ is then to be treated as विशेषणम यज्ञः एव अर्थः यस्य तत् यज्ञार्थम बहुव्रीहि अन्यत्र elsewhere also in अयं लोकः कर्मबन्धनः all are पुल्लिंग प्रथमा एकवचन अयम इदम सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम लोकः लोक पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम कर्मबन्धनः कर्मबन्धन पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम
and it's because it is a compound word, karmana bandhanam yasmin saha karma bandhanaha. Bahuri. Yajnathat karmanaha, apart from what karma is performed as yajnaha, anyatra, elsewhere, that is in any other instance, this ayam, world, lokaha, is karma bandhanaha, potent of causing binding with karma. One cannot attain emancipation by indulging in karmani which are not performed as yajna karmani. Kaunteya tadartham mukta sangaha karma samachara. Kaunteya, son of Kunti, tadartham, away, saha artha yasmin tat, that being the logic, artha logic. Mukta sangaha, muktaha sangat iti mukta sangaha, panchami tatpurushaha, free of attachment. Karma, karman, napsaklingam, dvitiya ekvachanam. Because it is karma padam of samachara. Samachara, सम आचर, लोट, मध्यम पुरुषः एकवचनम. कौंतेय, ए सन ऑफ कुंती, तदर्थम, दैट बीइंग द लॉजिक, कर्म समाचर, कंडक्ट एक्शंस, मुक्त संगः, फ्री ऑफ अटैचमेंट्स. छंदो विश्लेषण. नियतम कुरु कर्मत्वम, अष्ट अक्षराणि. रुकर्मत्वम, एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. कर्मज्यायो यह कर्मणः, अष्ट अक्षराणि. यह कर्म, एतेषां मात्राः एका द्वे एका. शरीरयात्रा अपि च ते, शरीरयात्रा अपि च ते, अष्ट अक्षराणि. त्रापि च, एतेषां मात्राः द्वे एका एका. न प्रसिद्धेद कर्मणः, अष्ट अक्षराणि. द कर्म, एतेषां मात्राः एका द्वे एका. तृतीये पादे अपवादः, अन्यथा अनुष्टुप् छन्दः. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, अष्ट अक्षराणि. कर्मणोऽन्यत्र, एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. लोकोऽयं कर्मबन्धनः, अष्ट अक्षराणि. कर्मबन्ध, एतेषां मात्राः एका द्वे एका. तदर्थं कर्म कौन्तेय, अष्ट अक्षराणि. कर्म कौन्ते, एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. मुक्तसंगः समाचर, अष्ट अक्षराणि. समाच, एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अनुष्टुप् छन्दः. स्वाध्यायः, notes of self study. Frankly, I have been somehow reciting न प्रसिद्धेद कर्मणः as न प्रसिद्धेद कर्मणा. As such, my recitation rhymes well. It is not wrong grammatically, not wrong also for conveying the intended meaning. Na prasiddheda karmana is smoother for recitation than na prasiddheda karmanaha. My recitation also lends uniform interpretation by eliminating the option of Satchashti Prayoga. Maybe my recitation also could be taken as a Pathabheda. The word karma is sort of a non-translatable word, since it is difficult to choose one of the many meanings: action, work, deed, duty, job, function, task, performance, execution, etc. The phrase akarmanaha karmajyayaha brings to mind jayasi chet karmanaste mata buddhir janardana 3-1. Akarmanaha karmajyayaha endorses karma to be jaya. The retort seems to be that one need not dwell upon comparing between indulgence in karma vis-a-vis indulgence in buddhi. As such, indulgence in buddhi is also karma, right? Isn't that an interesting angle? The statement yajnarthat karmanaha anyatra ayam lokaha karma vandana raises a curiosity about what yajna karma is and how doing karma other than yajna karma causes karma bandhanam. From my study of Gita, I know that a wide variety of yajnas are detailed in dravya yajnas, tapo yajna, yoga yajnas tatha parai in 4-28, 4-30. We would be coming to that later. Now that is another aspect of study of Gita.
that one gets an overview of Gita and is able to correlate which thought in a previous work or in the verse on hand is discussed in more detail in later verses. Looks like Lokmanya Tilak set such a style of thematic study of Gita. There are as many as 16 essays in Gita Rahasya. The style previous to Gita Rahasya, as in Shankar Bhashyam, also in Sri Jnaneshwari, is of commenting verse by verse. In Gita Rahasya, there are both the essays and the verse by verse commentary. Sri Aurobindo's essays on the Gita are just essays. And Gita as a philosophy of God realization by Gurudev Ranade is a thesis and has the focus of God realization as against the focus of Karma Yoga Shastra in Gita Rahasya. These treatises seem to be experiential in the sense that the author takes and pursues the focus which he experienced in his study of Gita. For example, Lokmanya Tilak pursues his focus of Karma Yoga Shastra. Gurudev Ranade pursues his focus of God realization. The focus of Karma Yoga Shastra leads to study of Gita as science of management, since management principles are primarily for fulfillment of tasks. Siddhaye sarva karmanam. See 18-13. Basically, study of Gita should proceed further to experiencing Gita. Shubhamastu.